गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है? मैम एलिया। एलिया, हाउ आर यू? फाइन मैम। मैम हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हेलो नशरा, Hello, Miss. हाउ आर यू? Alhamdulillah, Miss. What about you? आई एम फाइन, थैंक यू। हेलो साहिब, Hello, ma'am. हाउ आर यू साहिब? I'm good. I would ask you later about the link of this course. Can we have a recurring link? Can you have what? Can we have the same link for every class? You want a recurring link, right? Okay. Yeah, that's an option, but sending a new link, of course, is more work for me as well. But it's just a security, let's say, option if I'm sending a new link, because a link can be misused, as you know. So that's why I'm sending a new link before the class. So I don't think whenever you sit on the computer to join the class, of course, you can open your email and click on the link. It's not difficult for you. Actually, it takes more time for me to set up the link, right? Yeah, I mean, there is one aspect to see, but I mean, there are a lot of teachers who are using. I know, of course, but Sahib, how does this affect you? I don't see that. It doesn't affect you. Actually, it's my work. It's more work for me. It's not more work for you, right? Right, but for many classes, it takes me. Yeah, like, that's okay, but that's what I'm saying. I've given you the, the logic behind it, and I don't see how it's a problem for you. Okay, so hello, Nawab. Nawab was in the meeting, but he doesn't seem to. Nawab, please unmute yourself. Hello, ma'am. Hello, beta. How are you? I'm okay. Good. Hello, Halima. Halima doesn't seem to have a mic. Okay. So I'm going to share chapter 1 with you, the chapter that we are doing. Okay. So and so Fahad, right? Okay. Let's see, where's the chapter? Okay, you can see this, right? Yes ma'am. Good. And now I'm going to give you this problem to solve, and I will give a point to the person who answers it. Okay, so when you want to answer it, you tell me your name and then you can answer it. I'm going to start with question number 8. Okay, right? And meanwhile, I'm going to take your attendance so you can work on this, and let's then take your attendance. I'll be taking the attendance, you can work on the problem. Okay, so let me see. Okay, so Fahad. Present, ma'am. Good. Okay, Fahad, you sent me an email about the experiment. You did find the experiment. The experiment was there in the snapshot that you sent me, right? There were 2 links. Yes. There were 2 links for the experiment, so that's clear. There's no Yes. problem. ठीक है, ma'am.
ठीक है, okay, good. Aisha, Sayyid Muhammad Ali Musa Mahnoor. Present, ma'am. Okay. Nimra, Sayyid Azad Asad, Farooq, Muhammad Ahmad Farooq, Muhammad Awais Khawer Gill, Laiba, Sahib. Present, ma'am. कौन बोला है? Laiba. Okay, Sahib. Present. Okay, Ilya. Present, ma'am. Good. Amna. Present. Good. Nashra. Present, ma'am. Aruba. Halima. Nawab. Nawab. Present, ma'am. Nawab. Present. How do you like to be called Nawab? Um, Nawab is your name, right? It's your first name. yes, ma'am. This is what I have in the list. Okay. So Sumavi and Saul Rafaqat. Okay, good. So now we go to the Ma'am. yes. I'm Amna Mohammed. क्या आप मेरी last class की attendance check कर सकती हैं? Because I joined 5 to 10 minutes late, I think. So Amna Maham, yes, I have 17th March I have your attendance, but 15th March I don't have your attendance. Yes. 17th. मैम 15 को मैं absent थी. हाँ, ठीक है. The last class was 17 को मैं आई थी. 17th was the last class and you're present there. Okay, fine. Yes, so Okay, ma'am. who would like to answer the question that I've just given you? As you know that we have completed this chapter, we are revising the chapter, and the assignment that you will be getting will be based on this, right? So you must have been preparing for that, and this is a practice for that. Okay, so yes, who would like to answer this? Okay, yes. Ma'am, first वो 60 नाम kilometer बोलो per hour. पहले. Tell me your name. Nawab. Nawab. Six, Okay. 60 kilometer per hour का है 16 meter per second. कितना है? 16.6 meter per second. Okay. और second का है 27.7 meter per second. Is this correct, or does someone have a different answer? Did you all get this answer, or did someone get a different answer? Hanji. So let's work it out. Nawab, can you help us work it out how you got this? मैंने इसको 3.6 से डिवाइड किया था. Why 3.6? How did you get 3.6? वो मैंने पढ़ा था कहीं. नहीं पढ़ा नहीं, मुझे बताओ तरीका. I want to know the method how you got this answer. Yes, Nawab. Okay, anyone else? ये तो मुझे पता है, आप गूगल में भी डालोगे तो चेंज हो जाएगा. So that was not the point. The point is to understand the concept, the method, and then the answer. Also, the purpose of this course is not just to get the answer. I know you put this in Google and you will get the answer. So anyone else who would like to explain? Yes, I'll give you, the person who will explain this will get a point. मैम इसकी समझ नहीं आ रही है. कौन बोल रहा है?
मैम गूगल में आंसर आ रहा है लेकिन वैसे Beta, कैलकुलेट नहीं हो रहा। Google is not a teacher, right? Okay, Yes, so मैम। we have completed the course and we have been working with these small concepts and formulas. So who can, I would like to give one of you a chance to explain so that you score a point. Otherwise, in the end, I will explain it, of course. So yes, who would like to explain? That's why I'm asking you. So this will count as your point. So अभी किसने बोला था? अभी कौन बोला था? What was the name of the girl who just spoke? आमना। Amna, हाँ बेटा. So anyway, Google was not. I can Google it myself, of course. Yes, but that was not the point. Yes, कौन बताएगा? आप लोगों ने तैयारी नहीं की असाइनमेंट की? It's now been 2 weeks. एक चैप्टर छोटा सा. Do you want to answer, anyone? Yes, ma'am, I will try. Who's speaking? Sahib. Sahib. चलो बोलो. Yes, ma'am. Later on, I can also. So, एक मिनट, दूसरा कौन बोला? Amna. Amna, do you want to explain? Yes, ma'am. And Sahib, you want to explain? yes. Okay, so Sahib, you start, then we'll talk to Amna. Okay, bye. Well, we need to convert these measurements from per hour, kilometer hour to meter and seconds. Can you walk So us through how you do this? yes, we have in 60 kilometer we have 60,000 meters, and in 1 hour we have 3,600 seconds. Yes. Okay, then we divide it, so we get the figure as 16 point something. Do you really get 16? Just a moment. So 6 and 100 and 10 divided by 6 is 1 and 40 divided by 6 is 6. Yes. Okay. Good. Sahib, you get the point. Okay. Sahib Khan, yes. Okay, good. So this was very simple. This was in fact the first class we had in which we were talking about units. And the second, of course, we will use the same method. So we are using the concept of prefaces, which is a table in which we know that kilo K is equal to 1000. And therefore 60 kilometer means 60,000 meter, right? And then as we know that 1 hour is equal to how many? 1 hour is equal to 60 minutes and each minute is 60 seconds. So 60 minutes is 1 hour is equal to 3,600 seconds. So that's how we get it. Is that clear? Yes, ma'am. Any questions? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, so great. Okay, so let's go to another question and let's look at this one. So मैम हमने आर्ट्स को डिवाइड इसलिए किया था ना नाम बोला करो क्योंकि I also want to recognize who's speaking. आमना। बोलो. मैम जो ये हमने सेकंड्स को डिवाइड इसलिए किया ना क्योंकि ऊपर नेगेटिव की पावर थी। बिल्कुल. So like kilometer hour inverse means kilometer divided by hour. या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं kilometer slash hour. ठीक है? Which means division. Yes, ma'am. Okay, fine. So now let's do question number 7. So I would like you to start with the first one and I'll give you 1 minute to do it and then you can tell me your name. The person who tells me first will get the point. Okay.
Okay. This is the question we're talking about.
Yes, have you solved it? Has anyone solved it? मैम सॉल्व तो कर दें. एक मिनट. ओके, कौन बोल रहा है? मैम आमना अब स्क्रीन नजर आ रही है. मैम फर्स्ट वाला होगा 6.78552 into 10 power 3. 6.7. एक मिनट. 6.7. आगे 8552 into 10 power 3. 1, 2, 3. So, do you all agree with this, or did someone get a different answer? Agree, ma'am. कौन बोल रहा है? Saul Rafaqat. Yes, Saul. बोलो. Agree, ma'am. Agree. Good. Okay. Anyone else who got a different answer? Do we all No, agree? ma'am, it's same. It's- No, ma'am. It's correct. So we give Amna 1 point, right? Okay. Amna Maham gets 1 point. Okay. So please close your mics unless if you have to say something. Let's move to the next question. Now I would like you guys to solve question number 4, and I give you a minute, and whoever solves it first will say their name, and then we will ask them to explain. Okay, so please solve question number 4. Okay. मैम जिन्होंने एग्री किया है क्लास पार्टिसिपेशन पे आंसर का जिनका ठीक है उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा मैम. नहीं बेटा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. ये कौन बोल रहा है? आप अगला आंसर करो, फिर आपको मिलेगा. आपने पूरा सवाल करवाना होता है. ठीक है, ठीक हो गया मैडम. कौन रहा है वैसे? सऊल रफाकत मैडम. राहुल, चलो अगला आप कर दो. करना है? ट्राई कर रहे हैं मैम. आमना मैम डन मैम. आमना माहम, आप अगला करना चाह रही हो? यस चलो किसी और को मैम चांस कर दो. लिया. नहीं, इट्स ओके. ओके मैम. किसी और को चांस. ओके मैम. चलो, आई वांट समवन एल्स टू गेट द पॉइंट नाउ. चलो शाबाश. यस, लड़की वीडियोस हैं, ये भी है, और जूम भी नहीं आया था. फातिमा वाला ज्यादा सब चीजें हैं. बयान अहमद नदीम. मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी. सऊल कौन रफाकत. कौन बोल रहा है? सईद रफाकत. आप लेट आए हो ना? सऊद रफाकत. सऊल रफाकत. यस मैम. तो लेट लगनी चाहिए. मैम वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू था इस वजह से. तो नेक्स्ट टाइम आपने टाइम पे आना है. ठीक है, जरूर मैम. Excuse me, मैम ma'am, मेरी भी please check अटेंडेंस नहीं mine too. लगी. एक मिनट. कौन कौन बोल रहे हैं? Halima Ijaz. क्या कह रहे हो आप? निम्रा आरिफ. क्या बात है? Ma'am, please check if you have marked my attendance or not. कौन? एक नाम बोलो. Halima Ijaz. हलीमा. हलीमा, यू वर लेट. Ma'am, I 10:05 पे ज्वाइन किया था. हलीमा, तो यू शुड ज्वाइन ऑन टाइम. ठीक है. Okay, ma'am. Sorry. ठीक है. ओके. मैम मेरी भी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी. निम्रा आरिफ. निम्रा, एक मिनट. निम्रा, आप भी लेट थी? यस मैम. बेटा लेट ना आया करो, राइट? ओके मैम. मेरी अटेंडेंस भी है. ये सब लेट कमर्स हैं. दूसरा कौन बोला था? मैम मैं निम्रा आरिफ. आयशा. Oh, wait a minute. I'm sorry. I did a mistake. Control Z. Wait. आप लोगों ने मुझसे गलती करा दी. Just a moment.
ओके, अब दोबारा बोलो, कौन लेट था? साउल रफाकत, निम्रा आरिफ, 1 मिनट, और निम्रा, 1 मिनट, निम्रा was late, yes. और कौन लेट था? हलीमा इजाज। अब नेक्स्ट टाइम आपने टाइम पे आना है सबने, राइट? ओके मैम। मैम हाफिजा आयशा, 1 मिनट, हाफिज आयशा, ओके, राइट। चलो जी, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। किसने सॉल्व कर लिया? मैंने साहिब। साहिब, तुम्हें पॉइंट मिल चुका है। अभी तो मैंने, और पॉइंट्स नहीं मिल सकते? नहीं और नहीं अभी मिल सकते, अभी मैं चाह रही हूँ पूरी क्लास पार्टिसिपेट करे, राइट? बाकी पॉइंट्स ठीक आप है। बाकी असेसमेंट्स में लेना, ठीक है? तो आज अभी तक पॉइंट एक साहिब को मिला है और एक आमना को मिला है, राइट? सो अब इनके अलावा कोई और भी बता दे, आप लोग भी सॉल्व करें ऑफ मैम कोर्स। अगर हमें नवाब, कोई नहीं मिलेगा तो फिर हम आपके पास आ जाएंगे। चलें, बताएं कौन बोल रहा है? नवाब मैंने ये शायद कर लिया है। नंबर 4, 4.5। नंबर 4 जी की बात कर रहे हो? जी, अच्छा जी, 4 नवाब, 4.5 क्यूबिक मीटर्स है शायद आंसर। शायद नवाब says the answer may be 4.5 क्यूबिक मीटर। meter cube. Okay, does anyone, अच्छा नवाब, can you walk us through how you got this answer? वो ये सेंटीमीटर्स वाली वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट किया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। करो, करवाओ हमें, लेट्स वर्क इट थ्रू। 300 डिवाइडेड बाय 100 ये क्या हो गया? मीटर्स, ओके। मीटर में कन्वर्ट हो गया, और वो 150 डिवाइडेड बाय 100 और 100 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 100, ये भी मीटर्स में हो गया। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ये भी मीटर्स में हो गया। सो ये 0 0 कैंसिल हो गया, यू हैव 3 मीटर्स मल्टीप्लाई 1.5 बाय और 1 1, ये क्या है? 1.5 मीटर्स और 1 multiply by 1 meter. So the answer is 4.5। 4.5 meter cube. So it's correct. So Nawab gets 1 point. सब लोगों को समझ आ गई है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Very good. So Nawab gets this point, and now we go to the next one. I would like someone to solve this one. Okay? ये वाला करो. I want all of you to solve it. लेकिन then one person जो सबसे पहले कर लेगा, he can explain. Why am I not getting it like this? Delete. Yes, who would like to explain this? Ma'am, so Saul, just a moment, Saul. Okay, Saul. So what's your answer? मैम 2.3 n नैनोमीटर है तो 2.3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -9 मीटर। Okay, do you all agree with this? Do you all agree? Yes, ma'am. Good. So Saul gets a point. I would like you guys now to do this one. Okay, number F.
डन मैम। नाम बोलो। आमना। आमना के अलावा कोई और बोले? Yes, anyone else? Who would like to take this point? तो फिर आमना को दे दें ये वाला पॉइंट। You want me to give this point to Amna? Okay, Amna, let's do it with you. What's your answer? Ma'am, it's 187 into 10 power 9. What? What's the unit? It's, ma'am, gigawatt. What should I write? GW. No, here, unit. क्या लिखूं यहाँ पे? Ma'am, I think GW gigawatt ही आएगा। यहाँ पे GW गीगावाट आएगा। अब आप सब लोग देखो और बताओ ये सही है या गलत है। नहीं मैम, GW नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जी का सिंबल आना चाहिए। खाली G आएगा। Again, the question is open to the whole class. मैम गीगावाट का सिंबल जी होता है। अच्छा, I want all of you to think about this. Is the answer she's given correct or not? That's my question to all of you. नो मैम। कौन बोल रहा है? नवाब, वहाँ पे वॉट आएगा सिर्फ। नवाब, आपकी आवाज जरा ऊंची करो। वॉट आएगा। नहीं, नवाब आपने क्या बोला है? Let him finish what he's saying. हाँ जी नवाब। मैंने कहा था वहाँ पे वॉट आएगा सर। वॉट आएगा सिर्फ। तो डू वी ऑल अग्री? खाली वॉट यस आना? मैम, यस मैम, खाली वॉट आएगा। क्वेश्चन देखना था मैम। तो आमना तुमने गलती की ना फिर? यस मैम। गलती थी ना? जी जी मैम। ओके फाइन। एंड सिंबल मैंने ध्यान से वो एंड वाला नहीं देखा, बिकॉज सिंबल जो टेबल में दिए थे वो हमने जी पढ़ा था इसलिए। हाँ, तो यू शुड बी केयरफुल। फिर इस तरह से फिर आप लोगों के जब मार्क्स कटते हैं तो फिर आप लोग हैरान होते हैं कि मेरे मार्क्स क्यों कटे। यू अंडरस्टैंड दिस? तो यस मैम। हाँ, तो राइटिंग द रॉन्ग यूनिट्स से आंसर क्या है आपका गलत हो जाता है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। सो लेट्स गो बैक। कहाँ थे हम लोग? हम लोग इधर थे, राइट? वेयर इज इट? This one. So therefore this was not supposed to be like, wait, this was just watts. And अगर मैं इसको कहूँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो फिर क्या होगा आमना? If I ask you, यस मैम। if I ask you to write this in scientific notation, then what would it be? क्या फर्क पड़ेगा? मैम 1.87। कौन बोला? महनूर। महनूर। 1.87 into 10 पावर 11। ये कौन बोला? 11 हो जाएगा मैम। कौन बोला? आमना मैम। 9 + 2। हाँ, तो anyway this point doesn't go to anyone क्योंकि ये बहुत से लोगों ने मिलके सॉल्व किया है। So you should understand this. These are the little mistakes जो कि already I'm sure all of you know these, but you made some small mistakes जिसकी वजह से you were getting the wrong answer, and this explains how sometimes you get surprised कि मेरे marks कम आ गए। So you lose marks by making small mistakes. So you should be very careful.
ठीक है, तो इसलिए योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर एंड देन यू शुड आल्सो बी, पहली बात होती है क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो एंड देन डू इट rather than being too quick. ठीक है, so these things are important. Now we have only 2 minutes. What can we do? मैम, हाँ जी मैम प्लीज ई वाला बता दें, क्वेश्चन नंबर 2 में ई वाला जो है एमपीए। हाँ जी, ये कौन बोला? मैम आमना। आमना, who would like to solve this one? जल्दी से कौन इसको करेगा? Who would like to solve this one? Who would like to do this? Oh my God. Okay. So who would like to do this one? We have only 1 minute left. Jaldi se, who can help us with this? Anji, who wants to take this point? मैम ये वाला पॉइंट आप ही ले लें, बता दें। कौन बोल रहा है? की समझ आमना। आमना, 203 मेगा मीन्स 10 raised to 6 pascals, और साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो 2.03 into 10 raised to 8 pascals. Pascals is a derived unit, it's not a fundamental unit, so it's the unit of it's the unit of pressure which is defined as force per unit area. ठीक है, समझ आ गई अब? तो आप अच्छी असाइनमेंट करना, अच्छी तैयारी करो, ठीक है? यस मैम। अच्छा, मंडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है? ठीक है मैम। असाइनमेंट आपने मूडल पे अपलोड की है? हाँ, मूडल पे करूंगी और आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। Ma'am, Saul Fakat, can you please explain about the assignment? I didn't understand what you said regarding assignment. Beta, assignment is going to be from chapter 1 based on the concepts and the formulas that we've studied in chapter 1. Okay, and it will be uploaded आजकल में. You should be prepared and then you should do it. उसकी deadline वगैरह मैंने आपको पहले बताई हुई है, ठीक है? चेक कर लेना. ठीक है, got it ma'am. Okay, take care. Bye. Thank you. Bye ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Hafiz.